हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज आम ये सेसन रे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम रो पीडियाट्रिक रे तरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे से क्वेश्चन आज आम डिस्कशन करबा। तो मु एटा एन क्लास रो क्वेश्चन नेछि, ठीक अछि। जेते रिपीटेडली क्वेश्चन आसे जीआई सिस्टम रो से सिलेक्टिव क्वेश्चन मु एठी आज पुट करछि। तो चलंतु देखिया से क्वेश्चन गुडा को तार आंसर, ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन हला system of 404. The nurse review. Wait a minute. The clinic nurse review the record of an infant and notes that the healthcare provider has documented a diagnosis of suspected Hirschsprung disease. तो Hirschsprung disease रे क्वेश्चन आछि एटा आउ एतारो रिपीटेड क्वेश्चन गोटे जुड़े देखिया को मिलबो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे। तो Hirschsprung डिजीज ऑलरेडी थ्योरी राम सर नै छंती, ठीक अछि। तो थ्योरी देखंतु फास्ट तापर क्वेश्चन बोलसे बुझी पारे। तो सस्पेक्ट करा अछि गोटे चाइल्ड रो infant ro Hirschsprung disease. Nurse review the assessment finding documented in the record, knowing that which symptoms most likely lead the mother to seek healthcare for the infant. तो माने नर्सिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट सब इवैल्यूएट कला परे माने कोन हेची पेशेंट को सब्सेट करा होची चाइल्ड को जे Hirschsprung डिजीज अछि। तो Hirschsprung डिजीज रो को साइन टा मोस्ट लाइकली साइन टा मदर छुआरो देखिले से शीघ्र हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करिवो। तो हम Hirschsprung डिजीज माने कोन Hirschsprung डिजीज रे एच आई आर एस सी एच एच Hirschsprung, ठीक अछि। तो ए Hirschsprung डिजीज कोन एटा एटा गोटे congenital anomaly, congenital anomaly, ठीक अछि। एथरे कोन होय Hirschsprung डिजीज रे हम जे गैंग्लियन थाए गैंग्लियन जो नर्व थाए सेटा एब्सेंट थाए। कोठे एब्सेंट थाए हम मेगाकोलोन आ रेक्टम एरिया रे हम ए गैंग्लियन नर्व एब्सेंट थाए जा जोगु कि माने छुआरो मेकोनियम भी पास होएनी कॉन्स्टिपेशन देखिया को मिले, ठीक अछि। तो कोन कोन साइन सिम्पटम देछि डायरिया, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, regurgitation of feeding and foul smelling ribbon like stool. तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हम देखिया को मिले पाइलोरिक स्टेनोसिस रे। पाइलोरिक स्टेनोसिस रे हमको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखिया को मिलबो। रिगर्गिटेशन ऑफ फीडिंग एटा देखिया को मिले हम जीईआरडी रे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर रे रिगर्गिटेशन ऑफ फीडिंग देखिया को मिलबो। आ डायरिया जदि किसी यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन थिबो ताले डायरिया देखो मिलो, नहले जदि हम प्रोफ्यूज डायरिया जदि आछि क्वेश्चन रे ताले प्रोफ्यूज डायरिया टा देखियो मिले हम ओथरे जदि कोलन रे हम किछि अल्सर अछि पेप्टिक अल्सर अछि ताले सेथरे हमको डायरिया देखिया को मिले। तो एता करेक्ट आंसर होछि फॉल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल। तो ए रिबन लाइक स्टूल टा एटा मने रखिता एटा होछि इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर Hirschsprung डिजीज। तो एटा ए जे रिबन लाइक स्टूल एटा होछि इंपोर्टेंट पॉइंट और इंपोर्टेंट साइन जेटा कि रिपीटेडली क्वेश्चन आसे कहा थ्रू Hirschsprung डिजीज, ठीक अछि। तो
क्वेश्चन फास्ट 404 रो आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 405 405 रे कोन कहछि an infant has just returned to the nursing unit after surgical repair of cleft lip। ठीक अछि तो क्लेफ्ट लिप भी एटा बार्थ डिफेक्ट ठीक अछि लिप ठीक से फॉर्म होई न थाए तो सेते बेले हमें ताकू रिपेयर करा ऑन द राइट साइड तो राइट साइड रे क्लेफ्ट लिप अछि और पेशेंट जस्ट नर्सिंग यूनिट के आछि आफ्टर क्लेफ्ट लिप repair the nurse should place the infant in which best position at this time तो जते बेले गुटे चाइल्ड आछि क्लेफ्ट लिप रिपेयर करे तो नर्सिंग ऑफिसर ताकू को पोजीशन रे रखिबो तो ऑप्शन अछि प्रोन पोजीशन on the stomach left lateral position and right lateral position ठीक अछि तो प्रोन पोजीशन और स्टोमक पोजीशन ए सेम एटा हला प्रोन पोजीशन ठीक अछि प्रोन पोजीशन एथरे हमें कोन करिवा एवॉइड करिवा ए पोजीशन ता हमें कोन करिवा एवॉइड करिवा कोन पय एटा फ्रिक्शन हेबो ऑपरेटेड एरिया में ठीक अछि जति हमें छुआ को प्रोन पोजीशन देला ताले कोन हो फ्रिक्शन हेबो तो एटा हमें एवॉइड करिवा नेक्स्ट लेफ्ट लेटरल पोजीशन राइट लेटरल पोजीशन तो को साइड है जी राइट साइड रे क्लेफ्ट लिप प्रेजेंट अछि रिपेयर कराय छी तो राइट लेटरल पोजीशन को भी हमें कोन करबा एवॉइड करबा तो जो साइड ऑपरेट है छी से साइड रे हमें पोजीशनिंग देबा तो करेक्ट आंसर हैला लेफ्ट लेटरल पोजीशन हमें इन्फांट को देबा जदि राइट साइड क्लेफ्ट लिप रिपेयर करा है छी एटा देले फ्रिक्शन भी हेबनी टू प्रिवेंट फास्ट हला एस्पिरेशन और फ्रिक्शन भी अवॉइड माने हेबनी प्रिवेंट हेबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 406 कोन कहै छी the nurse review the record of a newborn infant and notes the diagnosis of esophageal atresia with tracheoesophageal fistula is suspected तो गोटे न्यूबॉर्न इन्फांट को कोन सस्पेक्ट करा होची देखो डेटा अछि कोन सस्पेक्ट करा होची एसोफेजियल atresia along with tracheoesophageal fistula एटा सस्पेक्ट करा होचे गोटे न्यूबॉर्न बेबी ठीक अछि नेक्स्ट द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट which most likely sign of this condition document in the record तो esophageal fistula tracheoesophageal fistula और esophageal fistula रे most likely sign कोन देखिया को मिले जेटा नर्सिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट करिवो रेकॉर्ड ठीक अछि तो ऑप्शन कोन अछि incessant crying coughing at night time choking with feeding and severe projectile vomiting तो कोन होय esophageal atresia एटा भी गोटे बार्थ डिफेक्ट कोन होय एटा हला हम ओएसोफागस ठीक अछि आ एटा हला हम स्टोमक ठीक अछि तो ओएसोफागस कोन होय स्टोमक रे अटैच होय तो बिफोर कनेक्ट with the stomach the esophagus will be closed तो ओएसोफागस टा एटा जे ओएसोफागस ठीक अछि एसोफागस टा स्टोमक रे अटैच हेबा आगरु कोन होय जाउची क्लोज हे जाउची ठीक अछि ए जे क्लोज हैला तो हमें कहबा ओएसोफागस ओएसोफाजियल कोन एसोफाजियल atresia ठीक अछि आउ एटा स्टोमक रे कनेक्ट हेनी तो एटा कोठी कनेक्ट हेबो एटा हला हम ट्राकिया ठीक अछि
तो ए ट्राकिया रे जाइकी ए ओएसोफागस टा कनेक्ट हे जे ठीक अछि एटा हला ट्राकिया वाला ए स्टोमक रे कनेक्ट न हे कि ट्राकिया रे ओपनिंग रे कनेक्ट हे गला एटा कहबा हमें ट्राकियो एसोफाजियल फिस्टुला ठीक अछि ताहले कोन लाइकली साइन देखा को मिलबो पेशेंट को एथरे हमकु मोस्ट 3C साइन देखा को मिले ठीक अछि 3C रे फर्स्ट सी रे आसीबो choking with feeding ठीक अछि choking देखा मिलबो आ गुटे सी रे कोन देखा मिलो coughing आ गुटे सी रे देखा मिलबो cyanosis तो ए 3C साइन देखा को मिले ट्राकियोसेफेजियल फिस्टुला पेशेंट ठीक अछि तो ऑप्शन रे कोन अछि हम choking with feeding ए सीटा अछि coughing at night time एट नाइट टाइम दे दीजी किंतु coughing रिकरेंट coughing देखा मिलो एंती नै जे खाली नाइट रे देखा जिवो आ डे रे देखा जेबो नै इवनिंग रे देखा जिवो एटा स्पेसिफिक नाइ coughing प्रेजेंट रहिबो ठीक अछि तो coughing ऑप्शन कोन होला choking with feeding होबो हम करेक्ट आंसर ठीक अछि फॉर ट्राकियोसेफेजियल फिस्टुला रे लाइकली साइन देखा को मिलिबो सीवियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कोथरे पाइलोरिक स्टेनोसिस रे देखा को मिले पाइलोरिक स्टेनोसिस रे देखा को मिले क्वेश्चन अछि नेक्स्ट हमें डिस्कशन करबा तो वीडियो लास्ट जे देखंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने मो एठी पुट करि छी आज नेक्स्ट क्वेश्चन 407 कोन कहै छी द नर्स provide feeding instruction to a parent of an infant diagnosed with gastroesophageal reflux disease ठीक अछि तो कोन कहछि नर्सिंग ऑफिसर फीडिंग इंस्ट्रक्शन दोछि पेरेंट को जार कोन हेछि छुआर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज अछि माने जीईआरडी अछि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स disease so which instruction should the nurse give to the parents to assist in reducing the episode of emesis तो जीईआरडी अछि तो पेरेंट्स को कोन से इंस्ट्रक्ट करिवो असिस्ट करिवो टू रिड्यूस द एपिसोड ऑफ एमेसिस एमेसिस माने वोमिटिंग तो वोमिटिंग को कम करिया पई से कोन एडवाइस देबो इंस्ट्रक्शन देबो पेरेंट्स ऑप्शन कोन अछि प्रोवाइड लेस फ्रीक्वेंट larger feeding next birth the infant less frequently during feeding third is thin the feeding by adding water to the formula and last one thicken the feeding by adding rice cereal to the formula ठीक अछि नेक्स्ट देखो ऑप्शन कोन अछि प्रोवाइड लेस फ्रीक्वेंट लार्जर फीडिंग तो लेस फ्रीक्वेंट हमें प्रोवाइड करबा किंतु लार्जर फीडिंग ने एथरे हमें स्मॉल फीडिंग ठीक अछि बर्थ द इन्फेंट लेस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग फीडिंग एटा आफ्टर फीडिंग रे एटा एडवाइस करा होय किंतु आफ्टर फीडिंग हमें इन्फेंट को बर्थिंग पई एडवाइस करू जदि जीईआरडी पेशेंट को बा चाइल्ड को थाए ठीक अछि तो ड्यूरिंग फीडिंग व्हेन thin the feeding by adding water to the stomach sorry to the formula तो हमें जे फार्मूला टा बनउछु ताकू जदि थिन करिवो वाटरी रखिवो ताले कोन हबो सेटा हाईली पुनी कोन करबो हम एमएसएस को इंक्रीज करिवो माने रिगर्गिटेशन हेबारो बेसी चांस थाए जदि लिक्विड बेसी दिया जदि थिन दिया ठीक अछि तो नेक्स्ट थिकन द फीडिंग बाय एडिंग राइस सीरियल टू द फार्मूला तो एटा होची हम करेक्ट ऑप्शन हमें एडवाइस करबा जे फीडिंग टा दउछथि सेटा ठीक करके बनेबे विथ एड राइस सीरियल ठीक अछि तो रिगर्गिटेशन हबोनी आ वोमिटिंग प्रिवेंट करियो तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 तो हमें कोन को एडवाइस करबा जदि जीआरडी चिल्ड्रन थिबो जे फीडिंग फार्मूला टा ताकू ठीक बनेबा पई एडवाइस करबा नेक्स्ट क्वेश्चन 408
ए चाइल्ड इज हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ परसिस्टेंट वोमिटिंग। ठीक अच्छे कौन होची परसिस्टेंट वोमिटिंग होची। परसिस्टेंट और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कोथि देखिया मिले हमको देखिया मिले एटा पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस रे देखिया को मिले। तो जदि गोटे चाइल्ड रो परसिस्टेंट वोमिटिंग होची the nurse should monitor the child closely for which problem। जदि frequent vomiting हबो ताले कोन प्रॉब्लम देखिया को मिलिबो। ताले ऑप्शन रे कोन अछि डायरिया डायरिया हबनी। ठीक अछि नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस हबनी। मेटाबॉलिक अल्कालोसिस मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हेबारो चांस अछि। ठीक अछि और हाइपर एक्टिव बाउल साउंड हबनी एटा रिड्यूस हो जाए बाउल साउंड इन प्रोफ्यूज वोमिटिंग टाइम। ठीक अछि तो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कोन पई हबो कोन पई कि हम जे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होची बॉडी। ठीक अछि तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होची जा जो कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखा जी। आउ मेटाबॉलिक एसिडोसिस केतेले देखिया को मिलिबो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखिया मिलिबो जदि पेशेंट रो डायरिया होची। डायरिया रे कोन होय हम बाइकार्बोनेट लॉस हुए बॉडी। ठीक अछि सही क्षेत्र रे हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखिया को मिलिबो। तो एता करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 409 क्वेश्चन कोन अछि the nurse is caring for a newborn with suspected diagnosis of imperforate anus। ठीक अछि कोन अछि imperforate anus अछि। the nurse monitors the infant knowing that which is the clinical manifestation associated with this disease। तो कोन अछि एतरे imperforate anus imperforate ता माने कोन तो जते बेले भी लार्ज इंटेस्टाइन या ट्रांसफर सेंडिंग तापरे सिग्मोइड सिग्मोइड रो हम आनस थाए। तो ए आनस रो जे ओपनिंग टा एटा क्लोज हेति कोन कहंती आनस ओपनिंग टा क्लोज थि एतो को हमें imperforate anus। ठीक अछि माने एटा क्लोज थिबो। तो जदि आनस टा क्लोज थिबो ताले को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिया को मिलिबो। ऑप्शन कोन अछि बाइल स्टेन फीकल एमेसिस। नेक्स्ट द पैसेज ऑफ current jelly like stool failure to pass meconium stool in the first 24 hour after bath। next such shape mass palpated in the upper right abdomen quadrant। तो bile sustain fecal emesis एटा देखिया को मिले intestinal obstruction रे देखिया को मिलबो। current jelly like stool एटा देखा जाए हमको इंटुससेप्शन रे देखिया को मिले इंटुससेप्शन रे आपको देखिया को मिलबो। इंटुससेप्शन क्वेश्चन अछि नेक्स्ट डिस्कस करबा फेलियर टू पास मेकेनियम स्टूल इन द फर्स्ट 24 आवर। जेतु आनस क्लोज अछि तो फेलियर टू पास मेकेनियम स्टूल इन फर्स्ट 24 आवर एटा देखिया को मिलिबो। ठीक अछि एटा हला करेक्ट आंसर। और sausage mass palpated in the upper right abdomen quadrant एटा भी हम इंटुससेप्शन रे देखिया को मिले। इंटुससेप्शन कोन कहै जाय एटा को टेलीस्कोप बाउल भी कहै जाय टेलीस्कोप बाउल भी कहै जाय। ठीक अछि नेक्स्ट तो हमें कोन फर्स्ट क्वेश्चन रे देखि देला हिर्शस्प्रंग डिजीज। हिर्शस्प्रंग डिजीज रे केमतिया स्टूल थिला रिबन लाइक स्टूल थिला। ठीक अछि तो हिर्शस्प्रंग रे कोन थिला रिबन लाइक स्टूल आउ इंटुससेप्शन रे कोन current jelly like stool। तो एटा मने रखंतु एथरे क्वेश्चन रिपीटेडली आसे। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 409
410 question. The nurse admit a child. The nurse admit a child to the hospital with diagnosis of pyloric stenosis. On assessment, which data would the nurse expect to obtain when asking the mother about child symptom? तो क्वेश्चन कौन कहछि पाइलोरिक स्टेनोसिस रे कौन हुए हम एज ए स्टोमक तापरे स्टोमक रु हम स्मॉल इंटेस्टाइन तो ए जे स्मॉल इंटेस्टाइन जे कनेक्ट होछि ए पार्ट को कहते हैं पाइलोरस ठीक अछि तो एटा हला पाइलोरस तो ए पार्टटा कोन हेबो नेरो हे जेबो एटा ठीक अछि तो एटा नेरो हे जेबो एटा को हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस जदि नेरोइंग हे गला पाइलोरस ताले हम ताको को पाइलोरिक स्टेनोसिस तो स्टोमक कंटेंट कोन हबो जो भागस देखि बाहर को आसेबो हमकु कोन देखा मिले पाइलोरिक स्टेनोसिस रे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग तो ऑप्शन कोन अछि watery diarrhea projectile vomiting increase urine output और vomiting large amount of bile आसीबनी ठीक अछि कोन आसीबो projectile vomiting देखिया को मिले पाइलोरिक स्टेनोसिस एटा हला ता माने इंपोर्टेंट साइन जेटा कि रिपीटेडली क्वेश्चन आसे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 411 the nurse provide home care instruction to the parents of a child with celiac disease ठीक अछि कोन अछि celiac disease अछि the nurse should teach the parents to include which food item in the child diet तो celiac disease रे celiac disease ताको gluten intolerance डिजॉर्डर कहै ठीक अछि तो हमें celiac disease रे कोन करबा अवॉइड करबा gluten diet ठीक अछि gluten diet को अवॉइड करू तो को डाइट ग्लूटेन ताले ग्लूटेन फ्री डाइट दिया होय तो को डाइट हमें पेशेंट को एडवाइस करबा तो ओट राइस ओटमील रेड टोस्ट एंड व्हाइट ब्रेड तो ये तीनटा डाइट जेटा अछि ओटमील्स रेड टोस्ट एंड व्हाइट ब्रेड एटा अछि ग्लूटेन डाइट तो एटा हमें अवॉइड करबा एटा हमें देबानी को पेशेंट को जो पेशेंट रो सीलियाक डिजीज अछि ताले हमें कोन कहबा पेशेंट को एडवाइस करबा जे राइस खाइबा ठीक अछि ब्रेड फ्रेड किछि दिया होबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 412 the nurse is preparing to care of a child with diagnosis of intussusception ठीक अछि कोटा intussusception ताको कोन को टेलीस्कोप बोली कहे the nurse review the child's record and expect to note which symptoms of this disorder documented तो क्वेश्चन कोन आइछि intussusception ताको टेलीस्कोप ऑफ कोलन भी कहा जाय ठीक अछि एते कोन होय माने हम जे इंटेस्टाइन अछि ठीक अछि ए इंटेस्टाइन तो को गुडे इंटेस्टाइन आ ता भीतर को पसि जाय छै ताको कोनती ए इंटेस्टाइन ता एता भीतर पसि गला एता कोनती इंटुससेप्शन बा टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन ठीक अछि तो कोन क्वेश्चन कोन अछि चाइल्ड रिकॉर्ड एक्सपेक्ट टू नो व्हिच सिम्पटम तो को सिम्पटम देखिया को मिलिबो watery diarrhea ribbon like stool profuse projectile vomiting bright red blood and mucus in the stool तो watery diarrhea एटा watery diarrhea देखिया को मिले अल्सर रे पेप्टिक अल्सर रिबन लाइक स्टूल कोटी देखिया मिलबे हिर्शस्प्रंग डिजीज रे ठीक अछि
प्रोफ्यूज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग को देखा मिले हमको एबे डिस्कस कला पाइलोरिक स्टेनोसिस रे ठीक अच्छे और ब्राइट रेड ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल देखा मिले हमको इनटू ससेप्शन रे तो एटा होची ऑप्शन 4 होची करेक्ट आंसर आउ स्टूल रो जे शेपटा केमती थिबा एथिरे ऑरेंज जेली लाइक स्टूल ऑरेंज जेली लाइक स्टूल देखा को मिले नेक्स्ट क्वेश्चन the last question 413 which intervention should the nurse include when preparing a care plan for a child with hepatitis ठीक अछि सिलेक्ट ऑल द ऑप्शन तो केयर प्लान कोन रहबो गुटे हेपाटाइटिस चाइल्ड पाई ठीक अछि ऑप्शन कोन देछि सिलेक्ट ऑल द असला मैं छोटा ऑप्शन तुमको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिवार अछि प्रोवाइड ए लो फैट एंड ऑयल बैलेंस डाइट teaching the child effective hand washing technique next scheduling playtime in the playroom with other children notifying healthcare provider if jaundice is present instructing the parents to avoid administering medication unless prescribed arranging the indefinite homeschooling because the child will not be able to return the school तो कौन कौन ऑप्शन अच्छी तो प्रोवाइड लो फैट एंड वेल बैलेंस डाइट एटा होबो करेक्ट आंसर प्रोवाइडिंग लो फैट एंड वेल बैलेंस डाइट दिया होबो जदि हेपाटाइटिस अछि तो हेपाटाइटिस एटा कोन हम लिवर रो इन्फ्लेमेशन को हमें हेपाटाइटिस को ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन ठीक अच्छे तो वायरल जो लिवर रे इन्फेक्शन अच्छे ताको हमें हेपाटाइटिस को तो फैट वेल बैलेंस डाइट दबा टीचिंग द चाइल्ड इफेक्टिव हैंड वाशिंग टेक्निक हां एटा भी करेक्ट आंसर तो हैंड वाशिंग पाई हमें करेक्ट टीचिंग देवा छुआ को जेतु हेपाटाइटिस अछि तो वायरल इन्फेक्शन पाई हैंड वाशिंग रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट शेड्यूल प्ले टाइम इन द प्ले रूम विथ अदर चिल्ड्रन जेतु वायरल इन्फेक्शन हमें शेड्यूल प्ले टाइम करबानी अदर चिल्ड्रन मान को सहित प्ले करिया को देबानी ठीक अछि से निजे निजे एका एका खेलिबाटा अवॉइड करबा हमें नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज जॉन्डिस इज प्रेजेंट तो जेहेतु हेपाटाइटिस अछि तो जॉन्डिस रहिबो तो एटा भी सठिक उत्तर नाही नेक्स्ट instructing the parent to avoid administering medication unless prescribed तो मेडिकेशन जेते जाए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करछि से मेडिकेशन देबा अनलेस ऑन प्रेस्क्राइब मेडिसिन हमें मेडिकेशन देबा पई मना करबा पेरेंट्स कोन पई किछि किछि ड्रग्स लिवर टॉक्सिसिटी कॉज करे ठीक अछि तो सेति पई हमें अनलेस प्रेस्क्राइब ड्रग्स को अवॉइड करिबा तो एटा भी रॉन्ग आंसर ना सॉरी अवॉइड होइछि तो एटा हमें करेक्ट हो ठीक अछि इंस्ट्रक्शन द पेरेंट टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन अनलेस प्रेस्क्राइब तो बिना प्रेस्क्राइब मेडिकेशन हमें छुआ को धरो सपोज जदि पेशेंट को ज्वर आसी विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन रे ताकू पैरासिटामोल रे दे देबे तो पैरासिटामोल हाईली टॉक्सिक टू लिवर सेटा हमें ताकू कहबा जे एटा अवॉइड करबा ठीक अछि तो एटा भी करेक्ट आंसर नेक्स्ट arranging the indefinite homeschooling because the child will not able to return to the school तो हमें चाइल्ड को आफ्टर 1 वीक पर चाइल्ड को हमें स्कूल को पठे पारिबा मेडिकेशन जतबे स्टार्ट हे जाए ठीक अछि आओ आफ्टर 1 वीक ऑफ जॉन्डिस रो
1 वीक पर आम छुआ को स्कूल को पठे पारिबा। तो घरे किसी अरेंजमेंट करवा दरकार नहीं। ठीक अच्छे। तो यार करेक्ट ऑप्शन कौन है? ऑप्शन 1 2 आउ 5। ठीक है 1 2 और 5 टा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में थिला जेटा कि रिपीटेडली आसे। तो कंप्लीट वीडियो को देखो। नेक्स्ट क्लास रे पुणी जो इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी क्वेश्चन अच्छी जेटा रिपीटेडली देखा मिली कंप्लीट एग्जाम रे सेटा मु नेकी आसबि। तो जो नर्सिंग ऑफिसर हम चैनल रे नया अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आउ फ्रेंड सर्कल मान सहित शेयर करूँ।